रिवाइज कीजिए 15.1.2 ग्रोथ इज मेजरेबल को। Growth at a cellular level is principally a consequence of increase in the amount of dash dash. चूंकि increase in dash dash is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. Growth is therefore measured by a variety of dash dash, some of which are increase in fresh weight, dash dash, dash dash, area, volume, and cell number. You may find it amazing to know that one single mesh-root apical meristem can give rise to more than dash dash new cells per hour, whereas cells in the watermelon may increase in size by dash dash times. In the former, growth is expressed as increase in dash dash, and the latter expressed growth as increase in dash dash. While the growth of a pollen tube is measured in terms of its dash dash, an increase in surface area denotes the growth in a dorsiventral leaf. रिवाइज कीजिए 15.1.3 फेजेस ऑफ ग्रोथ को। जी हाँ, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 phases, नेमली डैश डैश कॉमा डैश डैश एंड डैश डैश। फिगर 15.3 का माइंड कैप्चर कीजिए। चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप्स। The constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic dash dash. The cells in this region are rich in dash dash, dash dash nuclei. Their cell walls are primary in nature, dash dash and dash dash with abundant dash dash connections. The cells proximal, that is just next away from the tip to the meristematic zone, represent the phase of dash dash. Increased dash dash, dash dash and new cell wall deposition are the characteristic of the cells in this phase. Further away from the apex, that is more proximal to the phase of dash dash, lies the जी हाँ, that is more proximal to the phase of elongation lies the portion of the axis
which is undergoing the phase of dash dash. The जी हाँ, the cells of this zone attain their dash dash size in terms of wall thickening and dash dash modification. Most of the tissues and cell types you have studied in chapter 6 represent this phase. फिगर 15.3 में पैरेलल लाइन, जी हाँ, पैरेलल लाइन टेक्निक से किसको डिटेक्ट किया गया है? जोन्स ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द अपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्ट। रिवाइज कीजिए 15.1.4 ग्रोथ रेट्स को। बताइए ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं? The increased growth per unit time is termed as dash dash. Thus, rate of growth can be expressed mathematically. An organism or a part of the organism can produce more cells in a variety of ways. Figure 15.4 diagrammatic representation of A. Arithmetic, B. Geometric growth, and C. Stages during embryo development showing geometric and arithmetic phases का माइंड कैप्चर कीजिए और इसको 20 बार नोटबुक में बनाकर हमको दिखाइए। एग्जाम में ऐसे फिगर आ जाएंगे तो क्या आप इसको देखकर पहचान लीजिएगा कि अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। बताइए जाइगोट डिवाइड किस तरह से करता है, अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक या फिर दोनों? जो कलर पार्ट है वो ये सेल को शो कर रहा है जो कैपेबल है डिवीजन की। जो कलर पार्ट नहीं है बताइए वो किसको शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? ग्रोथ रेट शो करता है एन इंक्रीज। ये इंक्रीज किस किस तरह के हो सकते हैं? अर्थमेटिक ग्रोथ में फॉलोइंग माइटोटिक cell division only one daughter cell continues to dash dash while the other differentiates and matures. The simplest expression of the arithmetic growth is exemplified by a root elongation at a constant rate. Look at figure 15.5. On plotting the length of the organ against time, a linear curve is obtained. मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है बताइए? जी हाँ, एल टी इज इक्वल्स टू एल नोट प्लस आर टी। इस फॉर्मूले में एल टी इज इक्वल्स टू डैश डैश। L0 is equals to dash dash.
R is equals to dash dash slash dash dash. चलिए फिगर 15.5 कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ ए प्लॉट ऑफ लेंथ L अगेंस्ट टाइम T को 5 से 10 बार बनाइए या तब तक बनाइए जब तक कि आपको पूरी तरीके से याद ना हो जाए। Let us now see what happens in geometrical growth. In most systems, the initial growth is slow, that is dash dash phase, and it increases rapidly thereafter an exponential rate, that is dash dash. Here both the progeny cells following mitotic cell division retain the ability to dash dash and continue to do so. However, with limited nutrient supply, the growth slows down leading to a dash dash phase. If we plot the parameter of growth against time, we get a typical sigmoid dash dash curve. यानी फिगर 15.6। A sigmoid curve is characteristic of dash dash growing in a natural environment. It is typical for all cells, tissues and organs of a plant. Can you think of more similar examples? What kind of a curve can you expect in a tree showing seasonal activities? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बताइए किस तरह से एक्सप्रेस्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी। जी हाँ, W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT। बताइए इसमें W1 क्या है? W0 R T E। चलिए फिगर 15.6 एन आइडियलाइज्ड सिग्मोइड ग्रोथ curve typical of cells in culture and many higher plants and plant organs को 20 बार बनाइए या तब तक बनाइए जब तक कि आपको याद ना हो जाए। Here R is the relative growth rate and is also the measure of the dash dash referred to as efficiency index. Hence the final size of W1 depends on the initial size W0. Figure 15.7 diagrammatic comparison of absolute and relative growth rates. Both leaves A and B have increased their area by 5 cm square in a given
टाइम टू प्रोड्यूस A1 B1 लीव्स को 10 से 20 बार बनाकर, जी हाँ 10 से 20 बार बनाकर इसको याद कर लीजिए। Qualitative comparison between the growth of living system can also be made in two ways। बताइए इन दोनों वेज को। बताइए एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं? रिलेटिव ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं? Figure 15.7 two leaves A and B are drawn that are of different sizes but shows absolute increase in area in a given time to give leaves A1 and B1. However, one of them shows much higher relative growth rate. Which one and why?